पंचमुख हनुमत कवच. श्री गणेशाय नमः. ओम श्री पंचवदनांजनेयाय नमः. ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराड हनुमन् देवता. ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं किलकं क्रूं कवचं कै अस्राय फट्. ध्यान. पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुर्भिदर्शभियुक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं. पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्. अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं. पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं. उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णदीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्. ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानमान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं. जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यायेत् पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं. विनियोगः. ओम श्री रामजोतांजनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिरालङ्घनाय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीवनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय फाल्गुनमहासखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुख वीरहनुमन्त्रजपये. विनियोगः. प्रयोग मंत्र. ओम हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वौषट स्वाहा. ओम हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा. ओम हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 माराणाय स्वाहा. ओम हरिमर्कटमर्कटाय लूं 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 आकर्षितसकलसम्पत्कराय स्वाहा. ओम हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा. ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा. दिग्बंधन. ओम कं खं गं घं डं चं छं जं झं त्रं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं ळं क्षं स्वाहा इति दिग्बंधन. कवच पाठ. ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा. ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा. ओम पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा. ओम उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुख हनुमते सकलसम्पत्कराय स्वाहा. ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रूं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा. ओम अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा. भूतप्रेतपिशाच ब्रह्माराक्षस शाकिनीडाकिन्तरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा. सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पंचमुखवीर हनुमते श्रीरामचंद्र वरप्रसादाय जं 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 स्वाहा.
फलश्रुती। इदं कवचं पठेत्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षट्वारं पठे नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तस्य महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहिता श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।